آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم کے دیرینہ ساتھی نعیم الحق کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی آمد پر کریں گے بات اسی بلٹن میں۔ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کی دفتر خارجہ آمد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انطونیو گوتریس کا استقبال کیا۔ انہوں نے دفتر خارجہ میں پودا بھی لگایا۔ آپ کو بتائیں کہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس دفتر خارجہ آج آئے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انطونیو گوتریس کا استقبال کیا اور دفتر خارجہ میں انطونیو گوتریس کی جانب سے پودا بھی لگایا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس پاکستان میں آج دورے پر ہیں اور دفتر خارجہ آمد ہوئی ہے اور دفتر خارجہ انہوں نے آمد کے موقع پر پودا بھی لگایا ہے۔ محمود قریشی نے انطونیو گوتریس کا استقبال بھی کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انطونیو گوتریس کا استقبال کیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس آج دفتر خارجہ آئے ہیں، تشریف لے کر آئے ہیں اور دفتر خارجہ میں انہوں نے پودا بھی لگایا ہے اور ان کی آمد پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال بھی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا دورہ پاکستان، افغان مہاجرین سے ملاقات۔ کہتے ہیں افغان مہاجرین کی طویل عرصہ میزبانی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ افغان مہاجرین نے بھی پاکستان کی مہمان نوازی کو سراہا۔ اسلام آباد سے فیصل رضا خان کی رپورٹ دیکھیے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا دورہ پاکستان۔ افغانستان، یمن اور تاجکستان سے آنے والے مہاجرین سے ملاقات۔ پاکستان اور مہاجرین کو تعلیم، کاروبار اور ہنرمند تربیت کے لاتعداد مواقع میسر۔ پاکستان ترکی کے بعد مہاجرین کی میزبانی کرنے والا دوسرا بڑا ملک۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے مہاجرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام بہت زیادہ میزبانی کرنے والے ہیں۔ پاکستانی قوم نے افغان مہاجرین کی دل کھول کر میزبانی کی۔ افغان مہاجرین کی طویل عرصہ میزبانی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی فراخ دلی پر شکریہ ادا کرنے خصوصی طور پر پاکستان آئے ہیں۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل سے ملاقات کے دوران افغان مہاجرین کے نمائندوں نے پاکستان کی مہمان نوازی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا پاکستان ان کے لیے اپنا گھر ثابت ہوا۔ عظیم پاکستانی قوم نے انہیں اپنوں جیسا پیار دیا۔ مہاجرین نے اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کو اپنے ممالک میں مظالم اور تشدد سے فرار کی اندوہناک داستانیں بھی سنائیں۔ افغان جنگ کے دوران 45 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان آئے۔ پاکستانی قوم نے افغان مہاجرین کو چھت ہی نہیں، بہترین میزبانی، آسائش فراہم کی۔ پاکستان اس وقت بھی 27 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف افغان مہاجرین کے لیے دروازے کھولے بلکہ دیدہ و دل فرش راہ کیے۔ پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کے تحت افغان مہاجرین کو ترقی کی یکساں مواقع فراہم کر رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا 40 سال تک پاکستانی قوم کی لازوال قربانیوں کا ادراک کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کل نصب میں تصویری نمائش کا افتتاح کریں گے۔ نمائش کا مقصد پاکستان کی امن کاوشوں، قربانیوں اور عالمی امن کے لیے خدمات کو اجاگر کرنا ہے۔ رپورٹ کریں اسلام آباد سے فیصل رضا خان۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان اور اقوام متحدہ ساتھ ساتھ 6 دہائیوں پر محیط پاکستان کے سفر کی کہانی تصویری نمائش کی زبانی۔ امن کاوشوں کے 60 سال مکمل ہونے پر پیر کو سجنے والی مرکز برائے بین الاقوامی امن و استحکام میں تصویری نمائش کا افتتاح اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کریں گے۔ نمائش کے شروع میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی امن سوچ کی عکاسی کی گئی ہے۔ نمائش میں پاک فوج کی 1960 سے 28 ممالک 40 امن مشنز میں خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نمائش اقوام متحدہ امن مشنز میں جان دینے والے 157 پاکستانی اہلکاروں کی قربانی کا ادراک ہے۔ تصویری نمائش میں مختلف امن مشنز میں 78 پاکستانی خواتین کی خدمات کو دکھایا گیا ہے۔ پاکستان خواتین دستے تعینات کرنے والا پہلا ملک اور یہ عمل نمائش کا حصہ ہے۔ پاکستانی امن فوج کے لیے عالمی رہنما کے خیالات اور اقوام متحدہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہنے والے پاکستانی نمائندگان بھی نمائش کا حصہ ہیں۔ پاکستان کے پہلے امن دستے کی کانگو میں 1960 میں تعیناتی نمائش کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کریں گے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا پاک بھارت آبی تنازعات کے حل پر زور۔ کہا 2 طرفہ مذاکرات میں آبی تنازعات کا حل ممکن ہے۔ پانی ہر صورت امن کا ذریعہ ہونا چاہیے، تنازع کا نہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انطونیو گوتریس پاکستان کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ
पाक भारत आबी तनाज़ात के हल पर जोर दिया है और साथ साथ उन्होंने कहा कि दो तरफा मुज़ाकरात में आबी तनाज़ात का हल मुमकिन है। पानी हर सूरत अमन का जरिया होना चाहिए, ना कि तनाज़े का। पाकिस्तान भारत को मुज़ाकरात के जरिए आबी तनाज़ात हल करने चाहिए और पाकिस्तानियों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ, ऐसा कहना था एंटोनियो गुतेरेस का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मोहब्बत और शफकत से लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी भी की है। आपको बताएं कि अफगान मुहाजिरीन के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा है कि उनकी मेज़बानी की पाकिस्तान ने और मोहब्बत और शफकत के साथ, और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सैयद अली गिलानी की सेहत और दराज़ी उम्र के लिए दुआ गो हैं। वो अज़्म व हिम्मत की अलामत बनकर आज़ादी के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीरियों के शाना बशाना है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। सैयद अली गिलानी साहब की सेहत के लिए दुआ गो हूँ। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तादिर सलामत रखे। आपका वजूद कश्मीरियों के लिए बायसे हौसला है। पाकिस्तानी लोग और कश्मीरी जहाँ भी हैं पूरी दुनिया में आपके लिए दुआ गो हैं, क्योंकि आप एक अलामत बन चुके हैं। और यहाँ आपको बताएं कि FATF का प्लानरी इजलास आज पेरिस में होगा। पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही वजीर इक्तसादी उमूर हमाद अजहर करेंगे। इजलास में FBR, स्टेट बैंक, पार्लियामेंट और SECP की कारकर्दगी फोकस रहेगी। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि इजलास में FATF को 22 निकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इन निकात में स्मगलिंग, मशकूक तरसीलात, बैंक डिपॉजिट, कीमती असासों और प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के खिलाफ इकदाम हैं। FATF ने इन निकात पर कानून साजी और इदारा जाती कारकर्दगी का तकाजा कर रखा है। ज़राए का कहना है कि FBR, स्टेट बैंक, पार्लियामेंट और SECP की कारकर्दगी फोकस रहेगी। प्रॉपर्टी डीलर्स, वकला, बैंक हुकाम, FIA और कस्टम हुकाम की कारकर्दगी पर सवालात होंगे। इस ज़िमन में सख्त तरीन सवालात बैरून मुल्क से तरसीलात की तखरीबी फाइनेंस के तौर पर इस्तेमाल होने पर होंगे। वाज़ेह रहे कि FATF का इजलास 21 फरवरी तक जारी रहेगा। मुल्क भर में टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। तरक्याती मंसूबों को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले के नाम से मंसूब किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर उस्मान डार ने कहा है कि मुहिम का बुनियादी मकसद लीडिंग टैक्स दहिंदगान को इज्जत देना है। इस्लामाबाद से मरियम मलिक रिपोर्ट करेंगी। TI ने शहर, देहात और गली मोहल्लों तक नई मुहिम शुरू करने का प्लान बना लिया है। तरक्याती मंसूबों को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले के नाम से मंसूब किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मुहिम का आगाज सियालकोट से किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहरी ही करेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर उस्मान डार ने कहा है कि प्लान पर अमल दरामद से मुल्क भर में टैक्स कल्चर को फरोग मिलेगा। मुहिम का बुनियादी मकसद लीडिंग टैक्स दहिंदगान को इज्जत देना है। उनका कहना है कि मुहिम का आगाज गलीवार, यूनियन कौंसिल और शहर की सतह पर बैक वक्त होगा। मकामी अफराद को अपने अपने शहरों की तरक्की का शराकतदार बनाएंगे। जिला इंतजामिया से दरख्वास्त की है आइंदा मेरे नाम की तख्ती न लगाई जाए। और अब बात करेंगे नईमुल हक की। नईमुल हक को गिजरी कब्रिस्तान कराची में सपुर्द खाक किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ नईमुल हक की नमाज जनाजा आयशा मस्जिद में अदा की गई। मौलाना तनवीरुल हक थानवी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आपको बताया कि नईमुल हक को गिजरी कब्रिस्तान कराची में सपुर्द खाक किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ नईमुल हक की नमाज जनाजा आयशा मस्जिद में अदा की गई है। मौलाना तनवीरुल हक थानवी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मजीद जानते कराची से हमारे नुमाइंदे औरंगजेब जब्बार मौजूद हैं। औरंगजेब बताइएगा, सपुर्द खाक किया जाएगा, नमाज जनाजा अदा की जा रही है, कौन कौन सी अहम शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी नईमुल हक है, जिनका कल इंतकाल हो गया था। उनकी जो है वो नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद आयशा में अदा की गई थी। उसके बाद जो है वो गिजरी के कब्रिस्तान इनकी दस्ते खकी को लाया गया। यहाँ पर जो है वो अब सुपुर्द खाक कर दिया गया है नमाज जनाजा। और तदफीन में गवर्नर सिंह, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर जो अरकान असम्बली हैं, उनके अलावा जो है वो अजीज़ और अकारिब की बड़ी तादाद में शिरकत की थी। और अब जो है वो उनकी तदफीन करने के बाद जो है ये तमाम रहनुमा और अरकान असम्बली वापस जो है वो चुके। सही, बहुत शुक्रिया औरंगजेब जब्बार, आप हमें अपडेट करें। आपको बताएं कि नाज़रीन मनासिर भी आप देख सकते हैं कि नईमुल हक की नमाज जनाजा आयशा मस्जिद में अदा की गई और उसके बाद अब सपुर्द खाक भी कर दिया गया है कराची में ही गिजरी कब्रिस्तान में।
लंदन में मौजूद शहबाज शरीफ ने फिर सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि मॉडल टाउन में नून लीग के दफातर पर छापे गुंडागर्दी है। नैब इमरान नियाजी, जहांगीर तरीन और शहजाद अकबर शरीफ फैमिली के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इत्तफाक फैक्ट्री, कौमियाई जाने और दूसरी ज्यादतियों के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। मरियम नवाज का केस लाहौर हाई कोर्ट में है। उम्मीद है वालिद के इलाज के लिए उन्हें इजाजत मिल जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। गुंडागर्दी है, बदतरीन किस्म की गुंडागर्दी है। उन्होंने जिस तरह गैर कानूनी तौर पर जो प्रॉपर्टियां सील की हुई हैं और पूरे पाकिस्तान में इमरान नियाजी को और नैब को और जहांगीर तरीन को और शहजाद अकबर को, इसके अलावा कोई और फैमिली नहीं मिलती मासवाए शरीफ फैमिली के। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम बेटी का केस लगा हुआ है। इजाज़त मिले हाई कोर्ट से तो वो यहाँ पे आके अपने वालिद गिरामी के साथ उनका जो हार्ट का, मियां नवाज शरीफ साहब का जो मेजर जिनकी ट्रीटमेंट होने वाली है, खुदा करे कि मरियम बेटी। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म के मंसूबों के इफ्तिताह पर भड़क उठी। सेफ सिटी मंसूबा 2016 में शहबाज शरीफ ने शुरू किया था। पाकिस्तान सेहत कार्ड का नाम बदल कर इंसाफ सेहत कार्ड रख लिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डॉलर पर होने वाली वारदात में अरबों रुपए कमाए गए। आटे, चीनी की कीमतों में इजाफे पर भी 200 अरब का डाका डाला गया है। महंगाई के खिलाफ एहतजाज मुस्लिम लीग नून लीड करेगी। एक तरफा की बजाय सब इकट्ठे एहतजाज का ऐलान करें, राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश। गरीब आदमी जो है वो कॉमन मैन की जेब के ऊपर डाका डाला गया है, ये आटे और चीनी की सूरत में। और ये भी जो है वो 150 से लेके 200 अरब रुपए की जो है ये वारदात है। जहाँ तक PMLN का महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज या अपोजिशन के एहतजाज में जो है वो साथ देने का मामला है, PML साथ नहीं देगी बल्कि लीड करेगी। पहले दरअसल इसी तरह से हुआ था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तरफा तौर पे ऐलान कर दिया आज़ादी मार्च का और उसके बाद इस्लामाबाद जाने का। उस एक तरफा ऐलान से PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेफाक ना कर सके। इस मरतबा हमारी ये कोशिश है कि एक तरफा ऐलान तो दोनों ने कर दिए, हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब एज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन, PMLN एज़ बड़ी जमात के अपोजिशन में जो है वो सबको साथ बैठाए और ये एहतजाज जो है अपोजिशन का एक कंसेंसस के साथ और एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म से, जो APC पहले से वजूद में है, रहबर कमेटी भी जो है वो बनी हुई है, तो उसके ज़रिए से इसका जो है वो ऐलान किया जाए। शाह महमूद कुरैशी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। You have recognized the contribution Pakistan has made, and we do recognize the contribution of the UNHCR. Your personal efforts and your institutional efforts are acknowledged. We feel that collectively we have to agree on a roadmap of repatriation, which is time-bound, which is supported by the international community and is well resourced. We also understand that there will be a pull factor that will make that possible, and Pakistan has contributed to that pull factor by facilitating peace and reconciliation in Afghanistan. They will only return if there's peace there. After all, they left because they were not, and once there's peace over there, hopefully the environment would be there. In our discussions, it's a very challenging world today. Pakistan has always been supportive of the UN system. We have been a responsible member, I believe, of the UN system. We have excellent cooperation with them. And I have reiterated our support more than ever before.
because we understand how important multilateralism is and what an important role this institution can play for peace and stability. We are committed to the principles and objectives of the UN Charter, and we are also aware that there are elements that give preference to unilateralism over multilateralism, and one demonstration of that unilateral approach was seen on the 5th of August 2019. We've had a very frank and a very candid discussion on the Jammu and Kashmir situation. I have shared with the Secretary General Pakistan's point of view, Pakistan's concerns, and I've also highlighted to him what a challenging situation it has become post 5th of August. The illegal actions and unilateral actions taken by our eastern neighbor. I've also highlighted to him that how all shades of Kashmiri opinion, barring the BJP mindset, have rejected those actions. I've also pointed out the increasing ceasefire violations that have taken place post 5th of August, and that almost 200 days have gone by and the siege and the lockdown continues, and fundamental rights are being denied. I've thanked him for the statement made by his office on the 8th of August, reiterating the UN position on this internationally recognized dispute. I've also thanked him for permitting a briefing to the members of the Security Council by representatives of UNMOGIP and the political department of the Secretariat. He is the custodian of the UN Charter, and as custodian we have certain expectations, and I have pointed out 7 expectations of him. 1, that he should reaffirm the binding nature of the Security Council resolutions. 2, underscore the need to respect fundamental rights. 3, urge our neighbor to respect the 2003 ceasefire understanding between us. 4, consider Pakistan's proposal to strengthen UNMOGIP, which we feel has played a very important and continues to play a very important role. 5, ask the Commissioner of Human Rights, the UN Commissioner for Human Rights, to remain cognizant of human rights violations taking place over there, and to come out with the 3rd report. There was a report published in 2018, one in 2019, and now we feel the 3rd report should come out highlighting the current situation post 5th of August. We also, I've also asked him that there should be freedom of movement for the UNMOGIP people to fulfill their mandate. There's no restriction on our side. There are difficulties on the other side, and he should look into it. We discussed the Afghan situation. We've discussed the efforts Pakistan has made to facilitate the peace process, and there's recognition for that, and they acknowledge. And today we are being seen as part of the solution. There was a time when Pakistan was seen as part of the problem, but the pendulum has swung, and today the international community is seeing Pakistan as part of the solution. I also shared with the Secretary General the initiatives of the government vis-a-vis socio-economic issues, and I discussed our strategy
to achieve our targets, Sustainable Development Goal targets, our ESAS program, our Sehat Sahulat program, and also in conclusion, we also had a unanimity of thought on the challenge climate change imposes on Pakistan and this region. It was an excellent meeting, sir. Thank you for being here. Thank you very much. Honorable Minister, ladies and gentlemen, it is a pleasure to be back in Pakistan, a country deeply committed to multilateralism and to the United Nations. This is my first visit as Secretary General of the United Nations, but as High Commissioner for Refugees, I had the opportunity, I was fortunate to be able to visit this country several times. And as I said this afternoon in the conference on sustainable development and climate change, what I've seen as generosity, as solidarity in the Afghan people has created a love affair between the Afghan people and myself. And I'd like to thank the government of Pakistan and Prime Minister Imran Khan personally for inviting me, as well as Foreign Minister Qureshi for his strong support of the United Nations. I have a full agenda, but there is a common thread to all my events and meetings here. It is simply this: to recognize Pakistan's outstanding generosity and solidarity over many decades, and to highlight its place in confronting some of the biggest global challenges our world faces today. I strongly believe it is time for the world to step back and look at Pakistan through a wider frame. One of the main purposes of my visit is to spotlight the real Pakistan with all its possibilities and potential. It is deeply rooted in Pakistani culture, from the vision of Muhammad Ali Jinnah to the philosophy of Allama Iqbal, to the music of Nusrat Fateh Ali Khan. From the courageous example of Malala Yousafzai to the giving spirit of Abdur Sattar Edhi to the visual artistry and advocacy of Sharmeen Obaid Shinoy. And of course, on better days, we also see it from the bats of the Pakistan cricket team, both the men's and the women's teams, I might add. Here in Pakistan, we see solidarity in action. Pakistan is today the world's second largest host of refugees, and for decades it was the first. I look forward to taking part tomorrow in a conference marking Pakistan's 4 decades of support for Afghan refugees. For 40 years, despite Pakistan's own challenges, Pakistan has sheltered and protected Afghan refugees with limited support from the international community. I can testify to this. Having served as High Commissioner for Refugees, I always found in Pakistan a reliable and generous partner. One can only imagine how much worse the plight of Afghans would be and how much more unstable the region might be without Pakistan's stellar example of hospitality and compassion. The United Nations will continue to support Pakistan, and I call on other countries to support Pakistan and indeed show similar leadership in sharing this responsibility in this region and around the world. As we look to the issues of peace and security, the United Nations is profoundly grateful for the dedication and commitment of Pakistan's peacekeepers. Pakistan has consistently been one of the world's top contributors to UN peacekeeping, with more than 4,000 men and increasingly women serving today in 9 missions around the globe. I also appreciate the government's strong support for the Action for Peacekeeping initiative and its commitment to continue to improve the effectiveness of our operations. Foreign Minister Qureshi and I discussed regional security in South Asia. With respect to Jammu and Kashmir, I'm grateful for the work of the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. UMOGIP will continue to monitor the ceasefire at the line of control in accordance to its mandate. And today I was happy I could inaugurate the new premises of their headquarters. And I'm deeply concerned about the increase in tensions that we have witnessed last year.
I have repeatedly stressed the importance of exercising maximum restraint and taking steps to de-escalate, both militarily and verbally, while reiterating my offer to exercise my good offices should both sides ask. Diplomacy and dialogue remain the only tools that guarantee peace and stability, with solutions in accordance with the Charter of the United Nations and the resolutions of the Security Council. Simultaneously, when we see situations of discontent and unrest, it is of utmost importance to ensure full respect for human rights and fundamental freedoms. Turning now to Afghanistan, I'm following closely the important efforts to bring peace to the country. Achieving a comprehensive settlement to the conflict is essential for saving lives and advancing sustainable development. It is my hope that discussions will be productive in leading to a reduction in violence, especially violence that harms civilians. And reducing violence is critical to build confidence and support for a peace process that leads to a lasting political settlement and a permanent ceasefire. Such conditions would contribute to enabling the peaceful return of displaced persons and refugees to their homes. I want to reaffirm that the preferred durable solution for refugees has always been voluntary repatriation in safety and dignity to their country of origin, and this is also true for Afghan refugees. Through its support to the ongoing peace efforts and building the necessary regional consensus, Pakistan continues to play a crucial role in realizing this potentially historic opportunity for peace. And the United Nations remains committed to supporting an inclusive and Afghan-led peace process that upholds the human rights of all citizens and leads to a sustainable peace in Afghanistan. During my visit to Pakistan, I also look forward to visiting the newly opened Kartarpur corridor, connecting two key Sikh pilgrimage sites. This is a welcome symbol of interfaith harmony, a unique experiment in cross-border ties, showing Pakistan's commitment to peace. The climate crisis is another key challenge of common concern, and once again, Pakistan is on the front lines as one of the most vulnerable countries on the planet. I welcome Pakistan's ambition to take concrete action with the 10 billion tree tsunami campaign and many other initiatives. For my part, I will continue pressing for action to limit global temperature rise to 1.5 degrees, which means to achieve carbon neutrality by 2050. And it means more ambition by all, more ambition on mitigation, adaptation, resilience and finance. And major emitting countries and industrial sectors have a particular responsibility to lead the way. And it means a successful UN climate conference COP26 later this year in Glasgow, and I count on Pakistan's strong commitment to that. Finally, I would like to recognize Pakistan's commitment to the 2030 Agenda for Sustainable Development, the world's framework for eliminating poverty, achieving gender equality, protecting the environment, and building a fair globalization that works for all. Pakistan was in the global lead in integrating the Sustainable Development Goals into its own national development agenda. And this is yet another example of the commitment and vision that we need to see more of around the world. I look forward to the rest of my visit and engaging with the leadership and people of Pakistan, and the United Nations family is strongly committed to helping the country advance prosperity and peace for all. Thank you. Indus TV, Isa Nakrisaz. May I request you to please introduce yourself and also please let us know who the question is directed to. This is Isa Nakvi representing Indus News. Excellency, I'm here. My question is that I'll also, as Foreign Minister Qureshi has mentioned, I'll also refer to your statement of 8th of August last year, in which you reaffirmed United Nations' principled position on the Kashmir dispute. I wish to know what practical steps could you and your office take for the solution of this issue? And secondly, we are about 1.5 months into the year 2020, and there have been more than 287 ceasefire violations along the line of control. I wish to know what's stopping United Nations to ensure
that its military observers are given a hassle-free and free access to the line of control, as this may lead to a big conflict in the region. Thank you so much. Thank you very much. First of all, from the beginning, I have offered my good offices in relation to the situation, and of course, good offices can only work when accepted by both sides. On the other hand, I believe that there was an important contribution to clarifying what has happened by the reports that were mentioned of the Human Rights High Commissioner. On the other hand, it is clear that we have taken a position about the need for Security Council resolutions to be implemented and for effective de-escalation and dialogue linked to that, with another very important condition, which is full respect for human rights and continental freedoms in Jammu and Kashmir. In relation to the ceasefire, I visited Unmojib. We believe that Unmojib should have full freedom of movement. It has on the Pakistani side. We hope that this will also be achieved on the other side. And we will be strengthening its equipment capacity in order to better be able to implement its mandate. I take a question from the international media representatives here. Yes, can I have the Reuters representative? Reuters is not big. Oh, okay. Yeah, okay. I'll take a question from Independent News, Mona Khan. This is Mona representing Independent Urdu. My question is for Mr. Foreign Minister. The world is witnessing increased unilateral and xenophobic tendencies to exclude minorities on the basis of their